Hello everyone, in today's tutorial we are having one of the most essential topic and the topic is about how to learn English language with ChatGPT. Yeah, ChatGPT is a platform that has brought an enormous change to the world of education. बहुत एक बड़ा चेंज एजुकेशन में चैट जीपीटी ला चुका है एंड बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर क्या करना चाहिए कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज in this tutorial I'm going to guide you about how to practice English with ChatGPT और ChatGPT से आप English effectively और efficiently कैसे सीख सकते हैं. Now, ChatGPT is providing you conversation practice. आप जो चैट जीपीटी के साथ कॉन्वर्सेशन जिस टॉपिक पर आप करना चाहें चैट जीपीटी इज गोइंग टू डू दैट. आपने सिर्फ जो है जाना है उधर लिखना है. जो रोल प्ले आप करते हैं स्पीकिंग आप किसी टॉपिक पर करना चाहते हैं आप उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं चैट जीपीटी इज गोइंग टू आंसर ऑल दीज थिंग्स टू यू. So, practice your conversation with ChatGPT. You can practice conversation with ChatGPT. It is going to help you a lot. This is one of the most essential topic that I am going to teach you, and you need to follow that. The second thing is ChatGPT is going to help you to improve your vocabulary. Whatever topic you ask related to vocabulary. For example, you ask ChatGPT, give me vocabulary related school, related the city, give me words related the topic I am in the city. ChatGPT is going to provide you all these things. That is what it is helping English language learners to improve and learn more. सो जो भी आप जो है जिस तरह भी वेकेबलरी आप सर्च करना चाहो वेकेबलरी बिल्डिंग के लिए चैट जीपीटी इज द एसेंशियल प्लेटफॉर्म. इट्स गुड आइडिया टू कम एंड लर्न फ्रॉम देयर. थर्ड थिंग इज अबाउट रीडिंग. इट मेक्स यू एन इफेक्टिव रीडर. आप जिस टॉपिक पर इससे चाहो बताओ यू आस्क इट it will give you the answer. For example, you want to ask from ChatGPT about the importance of health. Complete topic आपको देता है. You need topic. या आप उसको बताते हैं tell me about human nature. It will tell you. वो आपको सब बताता है. या आप उससे पूछते हैं how should I describe my school in good words. आपको प्रॉपर जो है वो टॉपिक राइट करके दे देते हैं. दैट्स हाउ यू शुड इम्प्रूव योर रीडिंग विद दैट. आप जिस टॉपिक पर नहीं समझते आपने स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी में जो है आपको दिया गया है यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू गो टू चैट जीपीटी सर्च इट कीवर्ड उसका आपने डिफरेंट लगाना है एंड यू विल गेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड एसेंशियल. आप उसमें ये भी लिख सकते हैं आई एम अ बिगिनर तो आपको बिगिनर इंफॉर्मेशन देगा. आई एम इंटरमीडिएट लेवल तो आपको इंटरमीडिएट लेवल की इंफॉर्मेशन देगा. इफ यू टेल देम दैट आई एम एडवांस लेवल स्टूडेंट इट विल गिव यू एडवांस इंफॉर्मेशन. It will also help you to improve your writing. ChatGPT is improving your writing too. How? For example, you are telling to ChatGPT, आप ChatGPT में जाके जो है लिखते हैं that I want to improve my writing. How should I improve my English writing skills? ChatGPT आपको complete information देता है. If you want to ask, I want to write about my city. How can I write an essay about my city? It will completely give you an essay on it. Or you are saying, I want to write about the importance of good governing system in the country. It will give you proper information. आपको पूरा topic लिख करके दे देता है. That ChatGPT is making things easy for you. So, English language learners, you're so lucky that you got ChatGPT. Even we teachers of English language are taking help from ChatGPT. हम English language teachers भी ChatGPT का help लेते हैं. ChatGPT is making you a regular reader. You can regularly read about any topic that you want
that you want to read about, you can read. And ChatGPT is also helping you with basic grammar. Ask ChatGPT about any basic grammar sentence rule, it will properly give you all the information about it. So try your level best to use it for positive aspects, to use it positively, and to use it for the purpose of learning. इसको आप purpose of learning के लिए use कर सकते हैं. And it will also provide you different types of practices, different types of exercises. आपको जो है, अगर आप vocabulary का exercise करना चाहे, just go and tell to ChatGPT, give me exercise related the beginner's vocabulary, basic vocabulary. Give me some attractive phrases and expressions related the any topic. तो आप अपना topic लिखे, for example, food, for example, restaurant, for example, you're writing about sports, तो आपको स्पेसिफिक एक्सप्रेशन फ्रेजेस सब दे देते हैं. आप ग्रामर में जो है क्या करते हैं, यू आर गोइंग टू गो फॉर स्पेसिफिक exercises in the grammar. ChatGPT is going to help you how to go for different exercises in the grammar. Now, simple present specific exercise आप उसमें कर सकते हैं, past में कर सकते हैं, future में कर सकते हैं, different tenses. So ChatGPT is only not helping advanced students. ये basic को भी help करता है, intermediate students, advanced, हर class की student को बहुत helpful है. Try your level best to use it effectively and efficiently and try to learn from ChatGPT. You guys are very lucky that you have such type of platform from where you can learn things easily, and this is making things easy for you. ये बहुत सारी चीज़ों को easy करके दे देते हैं, which is good idea to go for using it and learning from it. It was all from my side about learning from ChatGPT. If there is any question related the topic, you are expected to ask me. आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं. And if there is no question, you can suggest me some topics related the English language. अगर आपको एक topic difficult नजर आ रहा है, it's good idea to comment me and ask me in the comment box that sir, make video on this, and inshallah I will make it. Try your level best to take care of yourself. Have a great time. Stay blessed.